प्लीज, थोड़ा जल्दी करें। हेलो ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸಮಸ್ತ ಪೀಣ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 2024 ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಸರ್. ट्वेल्थ मैन कृपया थोड़ा जल्दी करें। थैंक यू, थैंक यू। आइए तो खेल शुरू होने जा रहा है। बहुत शानदार दृश्य है, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम पीनिया सेकंड स्टेज का, जहां पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना कल की गई और शानदार तरीके से एक एक रोमांचकारी कैच मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच एक और शानदार उपलब्धि, डांसिंग स्माइलिंग डॉल हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के सामने दिखाई पड़ रहा है। डांसिंग डॉल कहें या फिर स्माइलिंग डॉल कहें, क्या बात है। वो अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि वो आपको एंटरटेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद रविचंद्र आचार्य मंगलोर से, क्या बात है, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा प्रयास वो कर रहे हैं, उनका स्वागत है। बीच बीच में शानदार धुनों पर वो आपको नाच कर अपने टैलेंट को दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जोकर हमेशा हंसते हैं, रोते नहीं है। बहरहाल खेल की ओर बढ़ते हैं, शानदार खेल चल रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया सुपर फैशन श्रीलंका के कप्तान ने। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं और इस बीच स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त डेरिन है और गेंदबाजी के लिए आशिक तैयार हो रहा है। आशिक दूर वाले छोर से, रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जाता हुआ आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है। फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी से नहाता हुआ मैदान वातावरण को चकाचौंध कर रहा है। मेरे साथ सुरेश भट्ट जी मौजूद हैं, जो आप बीच बीच में आपको अंग्रेजी में आपको देखकर सुनाएंगे। दर्शक धीरे धीरे संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 20-25 हजार दर्शक इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। पीनिया सेकंड स्टेज का मैदान दर्शकों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है और क्रिकेट तभी सफल होता है जब दर्शक ज्यादा संख्या में हो। निश्चित तौर पर सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं इस शानदार फ्रेंड्स कप 2024 सीजन 2 में। तो आशिक गेंद को लेकर तैयार, स्ट्राइक एंड पर डेरिन। इस छोर से कमेंटेटर बॉक्स छोर से आशिक बिल्कुल 30 गज के दायरे के पास से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। इस मैच की पहली गेंद वो देखिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे, गुडलैंड स्पॉट से गिरने के पश्चात एक कोण बनाकर थोड़ा सा दिशा परिवर्तन हुई, स्विंग होकर ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकल गई और डेरिन इस गेंद को ऑन दी अप खेलना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं गया। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। ऑफ साइड पर दायरे को घेर कर लगभग 3 खिलाड़ी तैनात है, ऑन साइड पर लगभग 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, जी 4 खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। शानदार क्षेत्र रक्षण है, बिल्कुल एक चक्रव्यूह की तरह रचा गया। आशिक की गेंद ऑन द विकेट, क्या खूबसूरत शॉट है। फील्डर गेंद का पीछा करते गए, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ के बाहर और ये 4 रन। शानदार फ्रेंड्स कप 2024 का चौका। डीजे तो डीजे मौजूद नहीं है और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा तैयार हो जाए शानदार धुन को बचाने के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक। सुरेश जी आपको बुलाते हैं। ऑल अलोंग द कारपेट जिसे कहते हैं, क्या खूबसूरती के साथ स्ट्रेट ड्राइव किसे कहते हैं ये दिखा दिया। डेरिन ने लेंथ में ज्यादा थी, लगभग लोअर फुल टॉस थी, बल्ले का मुंह खोला, बिल्कुल क्रिकेट बुक स्टाइल में जिस तरह से खेला जाता है उस अंदाज में गेंद को स्ट्रेट ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए। Yes, that was an excellent shot. Down the track he goes, picked it up very nicely and played the shot straight down the ground, and there was no chance for any fielder to stop that ball because it was a fielding district power play over. All the fielders were inside the ring, so batsman has taken the great advantage of that and he got a boundary here. आशिक दोबारा तैयार हो गए, उस छोर से उनकी एक और गेंद।
दाएं हाथ से विकेट, इस बार गेंद को थोड़ा खेलने के प्रयास में थोड़ा बाहर निकल गए, मिडलर ऑफ स्टंप के सीध पर थी, ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और आशिक ने खुद जाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया। वो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और तेज तर्रार गेंदबाजी, लगभग 75-80 किलोमीटर पर आवर की उनकी गेंद रहती है और वेरिएशंस कितना वो करेंगे ये देखने वाली बात होगी। सुपर फैशन में अच्छे सशक्त गेंदबाज मौजूद हैं। एक और गेंद को लेकर आशिक तैयार। वो देखिए गेंद दोबारा लोअर फुट टॉस थी, गेंद को ड्राइव कर दिया और जड़ से निकालकर खोदकर गेंद को ड्राइव में बदल दिया। खूबसूरत ऑन ड्राइव था लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। लॉन्ग मिड ऑन क्षेत्र में दायरे के अंदर फील्डर ने गेंद को फील कर लिया, समेट लिया, रन देने का अवसर नहीं है। दोनों बैट्समैन आपस में बातचीत कर रहे हैं, डैरिन और गौरीश। तो दोनों के बीच में अगर भागीदारी बनती है तो निश्चित तौर पर ईजान स्पोर्ट्स को एक बड़ा सम्मानजनक लक्ष्य दे पाएंगे। ये गेंद देखा और गेंद स्टंप्स के सीट पर थी, मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर, लेंथ में ज्यादा, जिसको ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, बल्ले का निचला सिरा लगकर गेंद गई। एक रन लेने का अवसर डैरिन के पास और इस एक रन के साथ काफी देर के पश्चात गौरीश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। अंपायर से गार्ड लेने के पश्चात वो स्ट्राइक लेंगे। और जहां तक आशिक की गेंदबाजी का सवाल है, बहुत कम गेंदबाज जो लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज होते हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज और तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। लाइन और लेंथ पर नियंत्रण बहुत जरूरी है एक उच्चतम के गेंदबाज के लिए। ये गेंद पलट कर गेंद को हवा में उछाल दिया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है और फील्डर गेंद को रोक भी नहीं पाएंगे। गेंद टिप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन। इस बेहतरीन शो के प्रायोजक थे फ्रेंड्स कप 2024। सुरेश भट्ट जी, समय विवरण का कि किस तरह से शो खेला गया। जब थैंक यू डीजे, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, डीजे तैयार हो गए। उनसे अनुरोध करता हूं कि वो तैयार रहें चौके छक्के और विकेट्स पर शानदार धुन को बजाने के लिए। तो रिवर्स स्ट्रोक खेला गया, स्विच हिट किया गया। सुरेश भट्ट जी, जब एक तेज तर्रार रफ्तार गेंदबाज का गेंदबाज लगभग 75-80 रफ्तार की वो गेंदबाजी करते हैं और ऐसे गेंदबाज को स्विच हिट करना आसान बात नहीं है। Well, Gaurish Acharya realized that it's a free power play over, so attempted for a switch hit and he found complete success in playing that one. A Gaurish Acharya, a young man having lot of future, is the one of the proudest player of Izaan Sports Club and he has been the backbone of the team and he is doing right job at the moment. What a great flying start for the team Izaan Sports Udupi here. क्या बात है, हामिद आक्रमण पर आ रहे हैं, दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक एंड पर जो कि डैरिन 5 की व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं। गौरीश 4 पर हैं, क्या योजना बनाते हैं। उस छोर से हामिद की गेंद और श्रीलंका के एक सशक्त गेंदबाज जिनको आक्रमण पर उतारा गया है। राउंड विकेट की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को घुमाने का प्रयास किया, गेंद पैरों से टकरा कर निकल गई और जोरदार अपील अंपायर ने लेग बाय का संकेत किया। एक तरह से कहा जाए कि हामिद थोड़े से निराश हो गए जब अंपायर ने इस गेंद को, इस अपील को खारिज किया तो निश्चित तौर पर उनके सामने अंपायर बिल्कुल पाषाण की तरह दिखाई पड़े। लेकिन अंपायर ने विश्वसनीय तरीके से देखा कि गेंद लेग स्टंप को, शायद स्टंप्स को छोड़कर निकल रही थी या फिर टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल था जिसकी वजह से इस अपील को उन्होंने खारिज कर दिया। एक रन लेग बाय के रूप में बन चुका है। हामिद आक्रमण पर तैयार, दूर वाली छोर से उनकी गेंद, राउंड विकेट ये गेंद, क्या बात है, बहुत अच्छी गेंद थी और गौरीश इस बार थोड़ा सा बीट हो गए। अप्रत्याशित रूप से गेंद उछल कर आई और अंदाजा, अनुमान नहीं था इस वक्त गौरीश को कि अचानक गेंद इतनी उछल कर आएगी। पहले बड़े बैकलिफ्ट के साथ स्विंग किया था लेकिन अचानक देखा कि गेंद ज्यादा उछल गई है, उसको रोकने के लिए अपने आप को रोक लिया। विकेट कीपर के हाथों में जाकर गेंद समा गई, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। दोबारा उस छोर से यह गेंद हामिद की, गौरी स्ट्राइक एंड पर। राउंड विकेट, एक और अच्छी गेंद, लगातार ऑफ स्टंप का आक्रमण कर रहे हैं और घुमाकर गेंद को
पुल करने का प्रयास, लॉक स्वीप करना चाहते थे, चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। थोड़ा सा स्लो आर्म डिलीवरी थी, जानबूझकर थोड़ा सा गेंद को धीमा फेंक दिया हामिद ने, और इस पासे में बैट्समैन थोड़ा सा फंस गए, थोड़ा जल्दी कर गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। अब दोनों बैट्समैन आपस में बातचीत कर रहे हैं। शानदार खेल चलता हुआ, रोमांच हर पल बढ़ता हुआ, और हर पल में उत्साह, उमंग जो कि वातावरण में घुल मिल रहा है। उस छोर से हामिद आक्रमण पर तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर थी, क्या कमाल की गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गति परिवर्तन होकर ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा निकल गई। उसका पीछा किया था बैट्समैन ने, और गौरीश ने उसका पीछा किया, मिस कर गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, बच गए कि बल्ले का सिरा नहीं दिया। दोबारा दूर वाले छोर से आक्रमण पर हामिद तैयार। राउंड विकेट, एक और गेंद बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट से गिरने के बाद उछल कर आ रही है, और गौरीश बीट होते जा रहे हैं। दोबारा गेंद को पुल करने का प्रयास, चूक गए, विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में काम चल रहा है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। दो लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज इस्तेमाल किए गए हैं श्रीलंका की तरफ, माफ कीजिएगा, श्रीलंका की तरफ से, और दोनों शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभ्यस्त हैं, काफी अच्छा होमवर्क किया है, अभ्यास किया है, नेट प्रैक्टिस किया है, लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक निशाने पर है। बैट्समैन को परेशान करने में अब तक काफी सफल हो गए। उस छोर से हामिद एक और गेंद को लेकर तैयार, और इस छोर पर गौरीश क्या कुछ योजना बदल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये गेंद और आखिरकार कब तक बचा जा सकता है। बोल्ड हो गए, यू मिस में आए, हिट यू डीजे। तो हामिद की ये गेंद, बैट्समैन थोड़ा सा क्रॉस द लाइन आकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हो गए। सुरेश जी, आप देख रहे हैं आजकल की आधुनिक गिल्लियां चमकीली जुगनू की तरह टिमटिमाती हैं, वो उड़ गई और बैट्समैन चारों खाने चित होकर बॉल हो गए। Well, that was a fantastic perfect delivery there by Hamid. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डीजे, थैंक यू। कमाल की गेंद। सुरेश भट्ट, आपकी क्या राय इस गेंद के बारे में, क्या जबरदस्त गेंद थी। Well, the bowler Hamid is bowling exceptionally well here. Since it was a power play over, the batsman Gaurish Acharya was looking for a big hit, but 4 consecutive dot deliveries. So because of that, some kind of frustration on the batter, and finally it was almost like a Yorker-led delivery, pitching right up in the block hole, and the ball hitting the middle stump. As a result, Gaurish Acharya is out. A big blow for team Izaan Sports Udupi here, and the bowler Hamid has given the much required breakthrough here, and it is going to be a big wicket for Sri Lankan team. दोनों लेफ्ट हैंडेड ने बहुत अच्छा काम किया सुरेश जी, और आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज होते हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज, और श्रीलंका के खेमे में 2 ऐसे शानदार गेंदबाज मौजूद हैं। 2 ओवर समाप्त हो चुका है। अब जिम्मेदारी सुरेश भट्ट जी पर सौंपते हैं कि कुछ रनिंग कमेंट्री के साथ दर्शकों का वो मन जीतने का प्रयास करें, और जहां पर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है वहां पर इंटरेक्शन करेंगे। आगे का विवरण सुरेश भट्ट। Thank you, Ajay ji. So welcome back to this Pina second stage ground for the 9th match of Friends Cup 2024. Very interesting match is going on here between Team Super Fashion Sri Lanka, a team from Island Nation. Alfan is a bowler now to bowl the 3rd over of the innings, and he will be operating his over from the commentator's box bench. Alfan bows to Durin. That was a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. The bowler will have to bowl with perfect discipline line. Wicket to wicket bowling is very much required, because not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery here. So bowlers will have to bowl perfectly straight to the wicket. They need to give more and more priority for the tight and direct accurate bowling. Let's see what kind of strategy the bowler will adopt here.
Alfan once again bounced to Derin. Derin converted it into full toss, crashing drive to the offside. Tremendous shot over the extra cover region, but there was a protection. The fielder from the extra cover region comes across and corrects the ball. But before the fielder corrects the ball, there is ample time for Derin to pick up a single here. Izaan Sports Club had defeated team KGN Nagpur in their first round match, whereas Super Fashion Sri Lanka, they had defeated mighty Banglore in the first inaugural match of day number 1 yesterday. So two teams, top teams, are now clashing against each other. We'll have to wait and see which team is going to win this match. 12 for the loss of 1 wicket. We are in the third over of the innings. Bowler continues in the left arm over the wicket fashion. The wicket keeper is making some change in the field placement here because the left-hander is on strike. Field has been spread out. Power play is completed. Have a look at the fielding placement on the onside. Almost all the players are standing very, very close to the boundary ropes here. Here is the next ball. Ball hitting the legs of the batsman, wraps onto the pad. Loud appeal there by the wicket keeper, but umpire says it is a leg by. The two umpires officiating for this match are Madhu Mysuru and Ibrahim Atradi. Madhu Mysuru is the main umpire there, and Ibrahim Atradi is standing at the square leg region as the square leg umpire. Very experienced umpires. So terrific atmosphere here today at Pina second stage ground. Fantastic cricket tournament organized by Bangalore Sports and Cultural Association registered. Full toss. The batsman wanted to convert that into full toss but couldn't take the advantage of that juicy full toss. The pace deceives the batsman. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper. Meanwhile, the fielder who was standing behind the wicket keeper was able to stop that ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. One more run has been added to the total of Izaan Sports Club Udupi, and their score now moves on to up to 14 now. Well, the umpire wants to check with the third umpire whether the ball was above the waist level. So to check whether it's a no ball or not. So TV umpire will come in action now. He will check in the television screen whether the ball was actually above the waist level of the batter here. So crowd have come in large numbers to witness this fantastic tournament. Ajay ji, have a look at the atmosphere, terrific atmosphere, beautiful cricket ground. One of the prestigious cricket tournament is going on here. 4 days of cricket festival, cricket carnival. There is a LED screen, big display, and people can also watch each and every matches of this tournament in SRB Sports YouTube channel. SRB Sports is the broadcast partner. They are hosting the live broadcast of this tournament. So what would you like to say about this Friends Cup 2024? Thank you, DJ. Thank you. Well, it's a good ball. Third umpire says it is a legal delivery and it's a good ball. So 14 with 1 wicket down. Over number 3 is in progress. It's a 8 overs match. बहुत शानदार क्रिकेट श्रृंखला सूरज जी, और क्राउड निश्चित तौर पर दर्शकों का ज्यादा संख्या में होना ये संकेत करता है कि बहुत बड़ी शानदार क्रिकेट श्रृंखला राष्ट्रीय स्तर की रचाई गई है। हर साल, हालांकि पिछले साल भी बनाया गया था, इस साल और ज्यादा संख्या में उम्मीद दर्शक उपस्थित हैं और आने वाले सालों में मैं समझता हूं कि लगभग 50,000 से ज्यादा दर्शक उपस्थित हों। So hats off to Renu Gowda and his entire Friends team here. That batsman gently pushes the ball into the gaps onto the offside region. The fielder comes across and collects the ball, but before the fielder collects the ball, there is ample time for both the batsmen to cross over for an easy single. So batsman gets one more single here. With that single, the total scorecard of Izaan Sports Club now moves on to 16. I beg your pardon, it is 15 for the loss of 1 wicket. 15 with 1 wicket down.
Two more balls to go of this over now. Once again, they are making some change in the field placement here. A good left hand and right hand combination are in the middle. Bowler bounce. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. That's a very fine delivery there, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper. So no possibility of a run there. The ball pitching on the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly. So no runs resulted. Dot delivery there by the bowler. So here is the last delivery of the third over now. Match number 9 of this tournament is going on here. The batsman played the shot all around the carpet, gently pushing the ball to the offside, just giving the touch, played a forward defensive stroke. There was a fielder, but he couldn't prevent the batsman in picking up a comfortable single here. So single in the last ball of the over to keep it at the strike. This is the end of the over. So after the completion of 3 overs, it is 16 for the loss of 1 wicket. Ajayji, a partnership is going on here between these two batters. After the dismissal of Gaurish Acharya, these two batsmen are taking the full responsibility of this game on their shoulder, and they are rotating the strike. What they are doing is just working the balls into the gap to pick up singles and doubles to keep the scoreboard moving and keep rotating the strike, and that's what they need to do now. And whenever they get some loose deliveries or full toss deliveries, only then they will have to look for wickets. What do you say? परिस्थिति के अनुकूल इस वक्त बल्लेबाजी करने की दरकार है सुरेश जी. मुझे लगता है कि ईजान स्पोर्ट्स इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पर है, दबाव में है, और इस वजह से दोनों बैट्समैन प्रसिद्ध और डेरिन परिस्थिति के अनुकूल बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंगल्स को बटोर रहे हैं. उनका विश्वास बिल्कुल धीरे धीरे लय के साथ बढ़ता जाएगा, और मुझे लगता है कि सिंगल से आप स्ट्राइक रोटेट करने के पश्चात एक मोमेंटम मिल जाता है. उसके बाद कहीं ना कहीं आप सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं. हौसला बढ़ाते हैं, कहेंगे कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. सुरेश जी. Absolutely true, Ajay ji. Sureka is a new bowler, has been brought back into attack here. Another medium-faced bowler, experienced bowler of Super Fashion Sri Lanka. As I mentioned earlier, yesterday, Super Fashion Sri Lanka defeated mighty Banglore, who were the runner-up team of last Friends Cup 2023. So this is the second season Super Fashion Sri Lanka have come all the way from island nation for the second time to take part in this prestigious tournament, which is being brought to you by Bangalore Sports and Cultural Association under the leadership of Renu Gowda. That should be a wide, no doubt about delivery. The ball was going far away from the off stump, and umpire Ibrahim Atradi has no hesitation in stretching his arms and giving a wide signal here. One more extra run has been added to the total, which takes their full score to 18 now. 18 with 1 wicket down. In fact, 4th over is in progress. Sureka is a bowler from the far end with a long run up he bowls. Left arm over the wicket fashion he bowls. That's again a very fine delivery there, which beats the batter here. The pace deceives the batsman. Ball defrosts the batsman and directly into the wicket keeper's baggage, and wicket keeper collects the ball neatly behind the stumps, and he has returned the ball back to the bowler. Once again the ball is in the hands of the bowler Sureka. Sureka on his way to the right-handed batter just flicks the ball onto the onside. Will they get 2? No, they will have to satisfy with only a single here. Good piece of fielding there by the fielder who was standing in the third man region. He had to cover a lot of ground. He was very quick, collects the ball and throws it back to the wicket keeper. Meanwhile, the batsmen just get a single here. So singles are coming more easily here. They are not finding any boundaries. They will have to look for big hits now in order to exert their score. Let's see what kind of strategy they will adopt. Here is the next ball. That ball keeping very, very low. Surprise the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. And once again, the ball has gone straight to the wicket keeper. Wicket keeper does the rest of the job. Bowler
Sureka is bowling with good line and length here. Straight down the ground, he played all around the carpet, he played in fact, played the shot to the deep mid-wicket region, worked away the ball to the mid-wicket, turned away the ball nicely, but there is a fielder, the fielder corrects the ball, so only singles are coming. Izaan Sports are not finding any big hits here, they desperately need big hits now. 20 for the loss of 1 wicket and last ball to go of the 4th over now. Sureka for the last time in this over. That's again very good bowling there, very economical bowling figures there by Sureka. He is really restricted the batsmen of Izaan Sports Udupi, and the batters are finding some difficulty here. They are slowly feeling the pressure here. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ವೀನಸ್ Banglore Sri Lanka. Two teams get ready for the toss. Real fighters Udupi versus Venus Sri Lanka. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए खेल का रोमांच बढ़ाते हैं। 4 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका के कमेंटेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे इनिंग्स में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी शानदार तरीके से विवरण सुनाते हैं। उच्च छोर पर जो कि बैट्समैन डैरिन स्ट्राइक एंड पर तैयार हो चुके हैं गेंदबाजी के लिए। इस छोर पर आशिक आक्रमण पर आ रहे हैं। आशिक अपने कोटे का दूसरा ओवर। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के सीट पर, तो इस बार गेंद को धीरे से पुश कर दिया। अच्छा स्ट्रोक और तेजी के साथ नाक के नीचे से 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। इसे 1 रन के साथ रन्स बरकरार पहुंच चुका 21 पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रसिद्ध स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। टाइम थोड़ा सा टाइमर पर ध्यान दे, टाइमर को थोड़ा सा ऑन करे कृपया। तो प्रसिद्ध स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है और ऐसे में कितना दिलचस्प मुकाबला होगा देखने वाली बात होगी। टाइमर को थोड़ा सा ऑन करें प्लीज। और जो लाइट्स फ्लिकर के साथ जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको थोड़ा सा रोक दे कृपया प्लीज, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो प्रसिद्ध स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं। इस छोर से ये गेंद आशिक की गेंद और इस बार उछालने का प्रयास किया, बीट होगा, गेंद पैरों से टकराई। इस जोरदार अपील को अंपायर ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने संकेत किया कि लेग बाय है। लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 22 रन से 1 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। प्रसिद्ध 1 रन चुराकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच चुके हैं और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त डैरिन आ चुके हैं।
दोनों बैट्समैन प्रयास कर रहे हैं कि एक भागीदारी को बिल्ड करें, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ईजान स्पोर्ट्स क्लब कहीं ना कहीं सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इस वक्त रनों की गति में काफी शिथिलता दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पर सख्त रनों की दरकार है इस वक्त। टाइमर को कृपया ऑन कीजिएगा प्लीज। स्विच ऑन द टाइमर प्लीज। तो आइए स्ट्राइक हैंड पर डैरेन तैयार, इस छो से आशिक की गेंद। ओ विकेट, और क्या कमाल की गेंद थी। ऐसा भी होता है, बिल्कुल अद्भुत अनोखी गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। यू मिस मी, आई हिट यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी गेंद, अंपायर थोड़ा सा ध्यान दे, स्टंप्स अभी भी बिल्कुल चमक रही है और बहुत खूबसूरती के साथ थोड़ा सा हवा में स्विंग हो गई, लेग स्टंप के बाहर लग रही थी, फिर अचानक गति परिवर्तन हुआ, स्टंप्स पर आकर गिरी, गिल्लियां उड़ गई और जुगनू की तरह टिमटिमाने लगी। इसी के साथ एक बहुमूल्य विकेट डैरेन के रूप में गिर चुका है। आशिक क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रीलंका के जितने सारे गेंदबाज हैं बहुत 100% दे रहे हैं। एक और गेंद को लेकर आशिक तैयार। और विकेट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे, इस बार पलटकर स्विच हिट करने का प्रयास और मिस कर गए। ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा बाहर निकल गए। विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अक्षय स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। अक्षय आते ही पहली गेंद को उन्होंने स्विच हिट करने का प्रयास किया, थोड़ा सा ओपन स्टांस, स्ट्राइक लेने के तैयार। ये गेंद स्टंप्स के सीट पर थी और ब्लॉक होल में डालने के प्रयास में थोड़ा सा लोअर फुल टॉस रह गई, उसको जड़ से निकालते हुए ड्राइव कर दिया अक्षर ने। और जब तक मिड ऑफ क्षेत्र में फील्डर आकर गेंद को समेट पाते आसानी के साथ अक्षय ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया। प्रसिद्ध को जिम्मेदारी सौंपी है, तो एक और विकेट गिरने के पश्चात दबाव अब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ ईजान स्पोर्ट्स उड़पे के ऊपर, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर ने कहा कि वाइड है। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा दिशा परिवर्तन होकर बाहर की तरफ निकल गई। प्रसिद्ध हालांकि खेलना चाहते जरूर थे, बल्ले को उठाया थोड़ा सा बैकलिफ्ट, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने आप को रोक लिया उन्होंने और जाने दिया गेंद को। और देखा अंपायर की तरफ, नजरों से की गई अपील को अंपायर ने स्वीकार किया और कहा कि वाइड। और विकेट ये गेंद हवा में उछाल दिया है, बिल्कुल कमेंटेटर बॉक्स के सामने गेंद आ चुकी है 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू। क्या कमाल का स्ट्रोक, 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि ये 5वां ओवर समाप्त हो चुका है। क्या कमाल का स्ट्रोक है। आते ही गेंद को देखते ही खूबसूरती के साथ लॉफ्ट कर दिया कमेंटेटर बॉक्स की दिशा में 6 रनों के लिए। उस छक्के के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 30 पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि 6वां ओवर शुरू होने जा रहा है। धीरे धीरे विश्वास बढ़ता हुआ एक छोर पर प्रसिद्ध जिम्मेदारी को कंधों पर उठाकर चल रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी ईजान स्पोर्ट्स क्लब की अब उनके कंधों पर है। जब तक वो क्रीज पर रहेंगे बात बनेगी। ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ಸಿಡಿಪಿ ಹಾಗೂ ವೀನಸ್ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. 2 ಟೀಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್. ವೀನಸ್ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ಸಿಡಿಪಿ. अक्षय शेट्टी स्ट्राइक एंड पर, हामिद गेंद को लेकर तैयार।
राउंड के लिए गेंद पलट कर गेंद को खेलने का प्रयास, चूक गए, मिस कर गए, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाया, कुछ ज्यादा बाहर निकल गई और लेग बाय के रूप में एक रन शॉट थर्ड मैन पर फील्डर ने गेंद को समेट लिया। इस एक रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 31 for 2, 31 for the loss of 2 wickets। 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। प्रसिद्ध स्ट्राइक पर आ चुके हैं और अक्षय चाहते भी यही है कि वो ज्यादा स्ट्राइक प्रसिद्ध को दें, क्योंकि प्रसिद्ध ने पिछले ओवर में जो खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बहुत सेट हो चुके हैं और अपनी टीम को सम्मानजनक लक्ष्य देने के लिए एक अहम भूमिका वो निभा सकते हैं। उस छोर से हामिद योजनाबद्ध तरीके से तैयार हुए, उनकी गेंद राउंड विकेट और उछालकर गेंद को खेलने का प्रयास किया। दोनों में ज्यादा कौन बुद्धिमान है, क्योंकि जिस तरह से बैक लेफ्ट के साथ पुल करने का प्रयास किया था प्रसिद्ध ने, हामिद ने गेंद को थोड़ा छोटा कर दिया और धीमा फेंक दिया। अचानक गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ देकर रुकना पड़ा बैट्समैन को और नियंत्रण में लाते हुए गेंद को ऑनसाइड की दिशा में मोड़ दिया और बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो एक रन को बटोर ले। इस एक रन के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 for 32 for the loss of 2 wickets। इस छोर पर अक्षय शेट्टी स्ट्राइक एंड पर है। हामिद बड़ी योजना के साथ, बहुत चतुराई के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अलग अलग वेरिएशन से बैट्समैन को परेशान करने का जो उनका प्रयास है वो लगभग सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी गेंद को छोटा, कभी लंबा और कभी स्लो आर्म डिलीवरी कर रहे हैं। उस छोर से उनकी इस ओवर की एक और गेंद राउंड विकेट। ये गेंद पहले शफल किया, गेंद को उछालना चाहते थे लेकिन फिर भी गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए। थोड़ा स्टेप आउट करते तो हाफ वॉली लेकर कहीं ना कहीं लॉफ्ट किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर शफल किया, फिर अंदर आ गए और इस प्रयास में गाड़ी निकल गई, यानी कि गेंद विकेट कीपर के हथेली में जाकर कैद कर ली गई और वो मिस कर गए। दोबारा हामिद मनोवैज्ञानिक रूप से जीत हासिल करते हुए अपने विश्वास को बढ़ाकर तैयार हो रहे हैं। राउंड विकेट, एक और गेंद और इस बार बीते हुए जरूर, लेकिन अंपायर ने हाथ को बाहर निकालकर कहा कि ये नो बॉल है। अतिरिक्त रन के खाते में एक रन की बढ़ोतरी, उसके अलावा आधुनिक नियम के अनुसार फ्री हिट का अवसर दिया जाएगा। न मालूम क्यों इतना अच्छा कर रहे थे, अचानक हामिद की एक ऐसी गेंद जो शायद दो स्टंपिंग की गई थी और इसको देखते हुए अंपायर अपने नियमों से बंधे हुए हैं। निश्चित तौर पर हर वो डिसीजन पुष्टि करने के बाद आश्वस्त होने के पश्चात देते हैं। तो फ्री हिट का अवसर और स्ट्राइक एंड पर अक्षय शेट्टी, क्या ऐसे अवसर को वो हाथ से जाने देंगे? क्या हामिद इस फ्री हिट के अवसर को रोक पाएंगे? देखने वाली बात है। हामिद तैयार, दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। राउंड विकेट उनकी गेंद इस बार पुल करने का प्रयास किया, गेंद शायद पैरों से टकराई है, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। जी हां, अंपायर ने संकेत किया लेग बाय का और ये फ्री हिट का अवसर जिसमें आक्रामक स्ट्रोक्स लग सकते थे, ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ एक रन लेने का अवसर बैट्समैन को इस एक रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 34 for 34 for the loss of 2 wickets। 34 for 2, आई रिपीट, 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर प्रसिद्ध स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। हामिद बड़ी योजना के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। हर उस गेंद को सोचकर अपने तरकश से ऐसे ऐसे तीर को निकालकर वो आजमा रहे हैं बैट्समैन पर, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। और भले ही नो बॉल किया था, फिर अपने आप को अंकुश में लाते हुए नियंत्रित गेंदबाजी उनकी चल रही है। वो छोर से एक और गेंद को लेकर हामिद तैयार और इस वक्त स्ट्राइक एंड पर उनके सामने प्रसिद्ध बाएं हाथ के बैट्समैन तैयार हो रहे हैं। राउंड विकेट गेंद थी और बहुत अच्छी गेंद, सूझबूझ के साथ की गई गेंद है। हामिद की इस गेंद को हालांकि ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे प्रसिद्ध, थोड़ा पीछे हटे, ऑन साइड पर पुल करने के प्रयास में देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ है और अतिरिक्त उछाल के साथ आई, अपने आप को रोक लिया और अचानक गेंद का ऊपरी हिस्सा देकर गेंद को पुश भर कर दिया और आखिर रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास बिल्कुल नहीं गया। रन आपको बता दें 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हामिद आक्रमण पर दोबारा तैयार, उस छोर से आखिरी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। सामने वाले छोर पर प्रसिद्ध है, आखिर कौन जीतेगा? राउंड विकेट, एक ऐसी गेंद बैट्समैन को छकाती हुई निकल गई, बीट कर गई
थोड़ा सा डिविएशन, गति परिवर्तन, दिशा परिवर्तन और बैट्समैन को बीट करते हुए विकेट कीपर के हथेली में जाकर कैद कर ली गई। इसी के साथ एक शानदार गेंद के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति पर Hello. Critical in action. 34 for the loss of 2 wickets और कुल मिलाकर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। बचे हुए 2 ओवर्स के लिए मैं दोबारा सुरेश भट्ट जी से आमंत्रित करता हूं कि जिम्मेदारी को संभालें और दूसरे इनिंग्स के लिए श्रीलंका से हमारे साथ बहुत शानदार कमेंटेटर मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव। आगे की आवाज सुरेश भट्ट जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ajay ji. So 6 overs gone, 34 runs on the scoreboard. We'll have to wait and see how many more runs they will be able to score in the remaining 2 overs. Crashing drive to the offside. Tremendous shot in between the 2 fielders. Ball is rushing towards the boundary ropes, but finally, at the end, very close to the boundary ropes, the fielder was able to stop that ball. The ball was traveling in between the 2 fielders. He had to cover a lot of ground, and at the end, he was able to cut it off. Meanwhile, umpire wants to check with the third umpire here whether the ball has crossed the boundary ropes, whether the fielder has touched the boundary ropes. Let's see what kind of decision will come from the third umpire here. So very interesting match is going on here between Super Fashion Sri Lanka, one of the hot favorite team of this tournament for the second time. They have been taking part in this tournament and they are playing now against Izaan Sports Club Udupi. Izaan Sports Club Udupi is a composite team of young talented players. Well, the decision from the third umpire is it's a boundary, 4 runs. 4 valuable runs will be added to the total of Izaan Sports Club. Izaan Sports Club, they had lost the state level tournament in Venkatramana Pitrodi. After that, they also lost a match in Nejar. That's also in the semi-finals. They have lost both the semi-finals. Even after losing 2 semi-finals in the Tirthalli DK Shivkumar Cup, they have crowned the trophy and they have become the champions, and now they are becoming a hot favorite team of this tournament. This is a second match for their team. Here's the next ball. Batsman played the shot nicely at long off, but there is a protection, so this time the batter will have to satisfy with only a single here. So single has been added to the total of team Izaan Sports Club Udupi, which takes their full score to 39 now. 39 for the loss of 2 wickets. Akshay is still there batting on 9 runs with the help of 1 boundary, and Prasid is batting on 11 with 1 sixer. Batsman pulled away nicely onto the outside. 1 bounce to the fielder. Good piece of fielding there by the fielder. Collects the ball. He was very quick, collected the ball and throws it back to the bowler. But before the throw reaches the bowler, there is ample time for the left-hander to pick up couple of runs. So 2 more runs have been added to the total of team Izaan Sports Udupi. Score moves up to 41 now. That's almost a Yorker and delivery there, pitching right in the block hole. The bowler is bowling in the right spot, but meanwhile it's a no ball call by the umpire. Main umpire Madhu Mysuru says it's a no ball. So some kind of discussion is going on there among the fielders of Sri Lankan team with the square leg umpire. 9th match of this tournament is going on here. After this, we have got 2 more matches. Altogether 9 matches will be there today. Yesterday 2 matches have been played. Super Sri Lanka had defeated a Mighty Cricket Club in the first match, and after that Venus Sri Lanka defeated Dasaralli 11 in the second match of the tournament in the day number 1 of Friends Cup 2024.
Well, it was a free delivery and the batsman couldn't take the advantage of the free hit, direct hit, but I think the batsman is well home there. He has come to the crease in the right time. Direct hits are always dangerous, but it's a good running between the wicket here. It was a risky run, but finally the batsman is safe. He's well home, so no damage done at all for the batter here, and they get a single here. Last ball to go of this over now. Here is the last delivery. Batsman once again played that shot to the offside, to the mid-off region. There is a fielder. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. There's the end of the over number 7. So after 7 overs, Izaan Sports Club are 44, double 4 on the board with 2 wickets down. They're having a run rate of just over 6 per over. I think this is not enough for the team because Super Fashion Sri Lanka has got a good batting lineup. So last 6 balls are remaining in the innings. Izaan Sports desperately need some big hits now. Let's see whether they will be able to pick up some boundaries or sixes in this over. Sureka will be the bowler to bowl the final over. Once again, there's a very, very fine delivery there which beats the batsman outside the off-stump delivery. The pace deceives the batsman. Ball betrays the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage, and wicket-keeper does the rest of the job. First ball is a dot delivery there by Sureka. Sureka on his way to the right-hander. Converted it into full toss, but couldn't take the advantage of that juicy full toss. Meanwhile, they're looking for the second run. There could be a chance of run out. But good running between the wicket here, aggressive running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total. Sureka for the third time. This time again the ball kept very low, surprised the batsman. The batsman doesn't know much about delivery, he doesn't have any clue about that ball, misses it completely. 3 more balls to go of this over. 2 dot deliveries there by Sureka in this last over. Well, the ball hitting the legs, ball hitting the wicket, but unfortunately, bails are not off. So very, very lucky indeed, I would say. Fortunately, the batsman survives here. Bails were not off, and leg bye has been signaled by umpire Ibrahim Atradi. 1 extra run has been added to the total here. Sureka is bowling exceptionally well. He's bowling in the right spot. He's giving more and more priority for the direct and accurate bowling. 47 runs on the scoreboard. Izaan Sports Udupi. Last 2 more balls are remaining in this final over. Sureka for the 5th time. Left arm over the wicket, he bowls. There could be a chance of run out. They were looking for the single here. The batsman misses the line of the ball, and wicket keeper collects the ball neatly. Meanwhile, the batters were looking for a single, and the square leg umpire Madhu has referred it to the 3rd umpire. We'll have to wait and see whether the batsman is inside the crease or not. So third umpire will be checking in the television screen now whether the batsman is well home or not. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಅದರ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬರಬೇಕು. And the umpire decision is out. So batter will have to move back to the pavilion here. 3rd wicket has gone down for Izaan Sports Udupi at the score of 47. Silent ಆಗಿದ್ರೆ ರಾಮ violent ಆಗ್ನೋ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಊರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು
So here is the last delivery of the final over of the innings. New batter has come to the crease here. So you are watching Friends Cup 2024 brought to you by Bengaluru Friends. Batsman goes for a fancy stroke. Ball safely landed into the no-man area. Very good piece of fielding there. Brilliant piece of fielding. He has saved a couple of runs for his team. Otherwise, the ball would have gone for the body ropes here. Meanwhile, a good running between the wicket here. Aggressive running between the wicket. 3 runs have been scored in the last ball. That is the end of the innings of Izaan Sports Club Udupi. So after putting into bat first altogether, Izaan Sports Udupi have scored 50 runs, exactly 50 runs. Now 51 will be the victory target for Super Fashion Sri Lanka to win this match. So 51 is a victory target for team Super Fashion Sri Lanka to win this match. This is not a difficult target for the team because they have got a very good batting lineup. So now the bowlers of Izaan Sports Udupi will have to be very, very smart. They will have to work very hard. If they can pick up 1 or 2 wickets in the early of the innings, definitely they can come back into this game and they can put the pressure on Super Fashion Sri Lanka. Let's see what's going to happen now, who is going to win this match. Meanwhile, it's time for us to change the commentary language. I've got Mr. Vinay Vudyavar is here with us in the commentary box, who is going to proceed the further commentary in Kannada language. Thank you very much. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀನಸ್ ಬೊಲೋಗ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ವೀನಸ್ ಬೊಲೋಗ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಸ್ಎಂಇ ಅನುಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆದರೆ ಈತ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ರಿ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಿಂದ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ವರ್ಸಸ್ ವೆನಸ್ ಬಲಾಗ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ವೆನಸ್ ಬಲಾಗ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ ಇರುವಂತ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 2ನೇ ಬಾರಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ 16 ತಂಡಗಳ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾವ ತಂಡ ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ತಂಡಗಳು ಆಯೋಜಕರೇ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ರೇಣುಗೌಡರ ತಂಡ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನರ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ಸಮೀರಾ ಅಂಡ್ ಧನುಷ್. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಿನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸಮೀರಾ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಕಾರನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರವಾಗಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ಪೀಣ್ಯದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರ ದೇಶದ 2 ತಂಡ, ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ದೇಶದ 2 ತಂಡಗಳು.
Danushka and Samira. Right-handed Danushka, left-handed Samira. Yeah. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಟಾಸು ಆಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ 51 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 48 ಎಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆಗಾರ ರಾಹಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 48ಕ್ಕೆ 51. ಎಸ್ ಟೈಮರ್ ರನ್. ಈ ತನ್ಮದ ಎನಿಸಲ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಳಸಬರ್ತಾನೆ ಸತ ರನ್ ಪಡ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐವತ್ತ 51 ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಎಸ್ ಅಪ್ ಅಡಿಷನ್ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಪಂದಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. balls 51 to 1. ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ತಂಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುದರಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಪತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಹಿಲ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಧನುಷ್ಕಾ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ರೇಣುಗೌಡರು ಈ ವರ್ಷ 5,05,550 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ವಿಜಯ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ಕಗೆ ಓಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರಾಯಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಎಂಇ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಹಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ. ಧನುಷ್ಕಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಲಾಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ಕ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 1 for without loss. 51 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 50ರ ಗುರಿ ಇನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 1994ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವಾಗ 30ರ ವರ್ಷ. ಬಹಳ ಸುಮರಿದ ಹೊಡೆತ ಸಮೀರಾ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಮೀರಾ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಆನ್ 2 for without loss. 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. 51 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ತಂಡ ಕೂಡ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಧನುಷ್ಕೆಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಮರಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಗಿ. ಹಲೋ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಐ ಅನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ವೀನಸ್ ಬೆಲೋಗ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ won the toss. Bishop
ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿನಾಸ್ ಬೆಳಗ್ನ, ಸೀತಾ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎಸ್ಎಂಎ ಅನುಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಹಲೋ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಇಜಾನಿನ ತಂಡ ವಿದೇಶ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಧನುಷ್ಕಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಗಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ವೇತಾ ರೇಣುಗೌಡು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸಮೀರ ದಾಂಡಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ಬೇರುಸನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಮೀರ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರವಾಗಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದಂತಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಟು ವಿನಯ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿತೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾರಿ ಸಂಪತ್ ಬೈಲಕೆರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಿತೇಶ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ನೋ ಬಾಲಿನ ಸೂಚನೆ. ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಮರಿಕರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1+ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಅಂಗದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 13ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲುಗೈನ ದಾಖಲಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 13 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪೀಣ್ಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಿಸ್ಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಜಾನಿನ ತಂಡ. ಲಂಕಾವನ್ನ ಮಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉರುಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ ಎಸೆತ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಆನ್ 13 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿ ವೈಭವಪೇತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್. ಇದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನೋದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೂಡ ಜೆಪಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮೀರ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಮರಿಕರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೀರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಸಮೀರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಾವು 19 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ದೇಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ ವಿತೇಶ. 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸಮೀರ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟ ಕಾಣೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಾಡು. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಆನ್ 19 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್.
Last 2 months are remaining now. Second over in progress. ವಿತೇಶ ಈ ಬಾರಿ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಚೋರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಳ ಮೊತ್ತ 20 ಓಟಗಳು, 20 ಫಾರ್ ನಾದೌಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 37 balls are remaining now. 31 runs to win. ಸುಲಭ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ಕಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವಾಲಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಚೆಂಡು ಧನುಷ್ಕ ಮುಖೇನ ಸ್ಕ್ವಾಲಕ ಸಿಮರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ತ ಹೊಡೆತ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ನ ಮೊತ್ತ 25 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಸರಿ, ತಳ ಮೊತ್ತ 24 ಓಟಗಳು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 24 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸ್ಮಾ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. Thank you, Mr. Vinay. Good evening, everyone in Bangalore. Sri Lanka Super Fashion versus Izaan Sport ODP game in progress. Winning team will qualify for the quarterfinals. So we saw exceptional bowling performance from 4 Sri Lankan left-armers. Now we are witnessing a great exhibition of batting performance from 2 Sri Lankan openers, Tanushka Sampath as well as Samira Sandaruan. Don't forget, in front of this Bangalore crowd, Sri Lanka's number 1 softball cricket team playing. So they are the number 1 according to the point system cricket ranking in Sri Lanka. Now he's going to bowl the third over. Pawan, he's ready to bowl the third over. Left-hander Samira Sandaruan on strike. 2 openers putting a solid foundation on behalf of Super Fashion Sri Lanka. Remember yesterday, Sri Lankan games were witnessed by more than 18,000 Sri Lankans via SRB Sports Live and point system. There he comes. The bowler, again he moves up to his run-up. Left-hander Samira Sandaruan. He's a thin man, but he can play big shots, no doubt about that. You have already seen him playing big shots. So Sri Lankan players, they are really enjoying the conditions in Bangalore. ಹಲೋ, ಆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್. This time Pawan runs and balls. Cover drive played by Sandaruan. Single added to the total. With that single score moves on to now 25 without a loss. Super Fashion Sri Lanka playing against Izaan Sport ODP. We are in Pina Stage 2 ground in Bangalore in India. So Sri Lankans, I'm really sure that they're all witnessing this game. So let's see, we will have a nail biter. There he comes, right armer Pawan. Runs and balls to Tanushka Sampath. This time plays it away towards the pit. We can run away to the boundary for 4. Brilliant timing by the right-hander. He found his rhythm. He was not able to open his account yesterday, but now he found his rhythm. He's playing shots, sensible cricket. Excellent batting by the right-hander. So remember, he is in, according to the batsman ranking in Sri Lanka, he's in number 1 for several years. He's one of the big hitters in softball cricket, no doubt about that. There he comes, Pawan, right armer. Runs and balls to Tanushka Sampath. They start right up Paisley, but it was landed in front of the field at deep point. They got through for a couple. So a bit of an aggressive batting style from Tanushka Sampath. With that couple, score moves on to now 29. Sri Lankan score moves on to now 31. Sri Lankan Super Fashion
They are in a really comfortable position. They need exactly only 20 more runs, 10 wickets in hand. So Pawan ready to bowl the next one. Super fashion Sri Lanka playing under the management of Mr. Janaka Peris. There he comes, right arm runs at boss. Tanushka Sampath tried to play another big one but didn't make any contact. Wicketkeeper collects it. No harm at all. Score remains on 31. Pawan slowly walks back to his mark. Now he's ready to bowl the next one against right-hander Tanushka Sampath. All eyes on this contest between bat and ball. French Cap 2024 in progress. Left it alone. It signaled as a wide way down the offside. So with that extra, score moves on to now 32. On behalf of all the Sri Lankan fans, I must thank Mr. Renu Gowda, the owner of Friends Sports Club and the Cultural Association, for organising this kind of a wonderful day-night cricket encounter. Right arm runs and balls again. Tanushka Sampath left it alone. Clever piece of batting. He understood that bowler is targeting the way down the offside length. So he's playing sensibly. That's what required. You have to read the opposition players really well. So score remains on 32 now. Right arm 33 now. This time playing out Paisley pulls it away over the fence for a half a dozen. So with that 6, score moves on to now 39. Big man on fire. He's playing big shots all around the park in Bangalore. So with that 6, score moves on to now 39. Only 12 runs needed, or in other words, 2 big hit aways from the victory. So super fashion Sri Lanka. They are playing brilliant cricket. Absolutely brilliant. Now, we cannot underestimate these Izaan Sports Club players. They are playing brilliant cricket, but they are a bit of an under pressure in front of the Sri Lankan team. There he comes, right arm. Runs at balls to Tanushka Sampath. This time plays it away towards wide long on. Down is the fielder. He picks it up and returns back to the bowler. Only a single. With that single, score moves on to now 40 without a loss at the end of the 5th over. At the end of the 3rd over, 50. So now 30 balls remaining, but only 11 runs needed. So 10 wickets in hand, not a difficult task at all. Especially Tanushka Sampath as well as Samir Chandaruan. Both openers are playing a really good batting performance. They are showing a really good batting performance. So now Dupi, Izaan Sports players under pressure. They are discussing what sort of tactics they have to apply in order to prevent these big boundaries from these 2 Sri Lankan openers. I will give a brief summary for all the viewers in Sri Lanka in first language in Sri Lanka as well, because I'm really sure that those fans are there. They are waiting for this moment. මේවට විට ශ්‍රී ලංකා සුපර් ෆැෂන් කණ්ඩායම ලකුණු 40ක් ලබාගෙන ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක පසු වුණු ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ තනුෂ්ක සම්පත් සමගින් සමීර සඳරුවන් මැනවින් පිට හසුරුවන ආකාරය දක්වා ලැබෙනවා. තවත් ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා. පන්දු ඉතිරිව තිබෙනවා 30ක් දාබර ක්‍රීඩාලෝඩි හිතබතුනි. එවැගේම ශ්‍රී ලාංකික සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට අප ස්තුතිය පුද කරනවා. මේ ඉන්දියාවේ බැංගලූරු නුවර පැවැත්වෙන ෆ්‍රෙන්ච් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අත්දැකීම විඳ ගන්නට එක්වුණු අතිවිශාල ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඔවුන් රටක් ලෙස ඒකරාශී වීමේ කණ්ඩායම දිරිගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් අප විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරනවා ඔවුන්ට. දාබර ක්‍රීඩාලෝඩි හිතපොතුනි ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයින්ට. Puneet runs and balls this time, playing a defensive struck. Excellent piece of batting, Tanushka Sampath. With that single, score moves on to now 41. 10 runs needed. We are having commentaries in several languages, so brilliant to see that, Mr. Vinay. ರಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ಟಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. Thank you. There he comes, right arm runs and balls to Sabir Sadaruan. Tried to play another big one, but didn't make any contact. No chance of a run. So, absolutely brilliant. So, we're loving these conditions in Bangalore. Sri Lankan players, they are thoroughly enjoying both the super fashion Sri Lanka as well as Venus Bologna Sri Lanka. Both teams are really enthusiastic to play cricket here.
So we are loving the hospitality of these Bangalore people. Thank you very much on behalf of Sri Lankans. There he comes, right arm, runs at ball, Sadaruan plays it away towards short third man. So single added to the total with that single. Score moves on to now 42 without a loss. 9 runs needed. Super fashion Sri Lanka. So remember that their bowlers exceptional. Muhammad Hamid was unplayable. So far he is bowling with a good consistency. Muhammad Alphonse, Reka Hetiarachi as well as Muhammad Ashik did the damage with the ball. Now these two are doing the damage with the bat. Danushka Sampath, right hand on strike. There he comes. Right arm runs and balls. This time plays it away towards cover point. Going for a single. If it was a direct hit, that may be the end of Danushka Sampath. Anyhow, they added another single. With that single, score moves on to now 43 now. 43 without a loss. So 8 runs needed. Samira Sandaruan is a thin man, but I'm really sure he can play big shot. Last 2 balls remaining. In the 4th over, there he comes, right arm around the wicket, runs at balls, left it alone, way down the offside, another wide. So extra run added to the total. With that extra, score moves on to now 44. 44 without a loss. Super fashion Sri Lanka. There he comes, right arm. Puneet runs at balls to Sadaruan, plays it away, upishly but safe. There is a feed at corner, he picks it up. Only a single. With that single, score moves on to now 45 without a loss. 1 big hit needed in order to qualify for the quarterfinals. Tatlakudu hayak pamana yawashe arda avasan pura target suduska labanda Sri Lanka super fashion kanai bute tabar kudalodi hitabotuni. There he comes, right arm around the wicket, runs at balls. Danushka Sampath played up his over the first game over. Sri Lankan super fashion. They are qualified for the quarterfinals. Thank you, Bangalore. Thank you for that Friends Cup on behalf of Mr. Janaka Piris and Super Fashion Sri Lanka. We are thanking all the lovers around Sri Lanka, all the fans as well as all the fans in India for cheering, for encouraging the Sri Lankan team. Thank you very much. Over to Mr. Vinay. Danushka, ಹಲೋ ಮುಕ್ತ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಧನುಷ್ಕಾ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರಾಂಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಧನುಷ್ಕಾ. ಆ ಒಂದು